any other place where we get to see the radiations being emitted? Any other place? When asteroids collapse with each other. When asteroids collapse with each other. Okay, even that is good one. Anybody else who would like to answer? और कहाँ रेडिएशन हो सकता है हमारे आसपास? Any place where you can find such radiations? Anybody else? Mandeep, Aditi, Vaishnavi, Mitali, Shivani, Sanika, Radha, Rashali, Surbhi. Anyone who can answer this question. Any other place, like Samidhan told about one. So any other place where you feel that is there the radiations are getting emitted and it can be highly risky to us. Anyone? तो आज तक कभी किसी ने रेडिएशन के बारे में सुना ही नहीं है? Is it that so? Yes. Have you heard about radiations or not? Say me yes or no. I have 14 students here. I want reply from each one of you. Have you heard about radiations? Yes or no? मॅम सोलर सिस्टम्स मधून पण निघतात रेडिएशन. Yes, right. Samidhan, I would like others to answer. You have already been answering. I want others to answer. Okay, Shivani, you have heard about radiations. So can you tell me any place or anything from which the radiations are emitted? Other than what Samadhan has answered, other than that, can you answer me? Any other place or any other thing from which radiations are emitted? Okay. So जो radiation होता है, basically radiations are something that is going to cause harm to our body, and जैसे समाधान ने कहा, it is present in the solar system. It is being released when yes, Shivani, thank you. It is from X-ray machines also we can have radiations being emitted. But as we go further in the chapter, you will come to know कि radiation सिर्फ X-ray machine या सिर्फ सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है रेडिएशंस, बट रेडिएशंस या फिर सिर्फ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में रेडिएशंस रिलीज नहीं होता है. But other than these events also, we have many such conditions when the radiations are being released and being emitted and can be of various hazardous effect. Okay, for example, अगर हम रेडिएशंस की ही बात करते हैं, मुझे आप बताओ आजकल हम जो ये हेडफोन्स पहनते हैं, ओके, हेडफोन्स में आजकल वायर रहता है? नहीं रहता है. तो वो कैसे ऑपरेट करता है? बिना इसके, बिना वायर के कैसे ऑपरेट होता है? रेडिएशन सिलेंडर. किससे? ब्लूटूथ से. ओके, ब्लूटूथ. उसके अलावा कोई और ऐसे देखे हैं आपने इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम इसे what we say is we can operate the earphones or headphones other than Bluetooth? प्रिंटर देखा है आजकल आप लोग ने घर में? प्रिंटर बिना वायर के भी आप कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हो. वो कैसे हो सकता है? एनीबडी, एनी आइडिया? या No, ma'am. You haven't heard about the printers lately? We have seen printers which are not connected to wires. ओके, वो डायरेक्टली आप मोबाइल फोन से ही प्रिंट दे सकते हो. अच्छा, एलेक्सा पता है? एलेक्सा देखा है? एको डॉट्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? यस मैम. ओके, वो कैसे ऑपरेट होता है? एनीवन? या एनीवन हु कैन आंसर दैट? Okay, I am sharing my screen, so if anybody has anything to say, you can directly switch on your mics and you can speak, okay? Because I'm sharing the screen, I won't be able to see the comment box. Okay, I hope everyone, my screen is visible to you all, okay? Yes, is the screen visible? Yes, ma'am. Yeah, Yes, ma'am. thank you. Yeah, thank you.
So when we talk about radiations, so it is not just these radiations which are emitted बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. जैसे कि अगर हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करते हैं तो दिमाग में आपको कौन सा इवेंट याद आता है जब भी हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ये वर्ड सुनते हैं? क्या आपके दिमाग में कोई इवेंट याद आता है? एनीवन? आपने सुना है कि ऐसा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था कहीं पे, कहीं ऐसे बॉम्ब Yes, ma'am. गिरा था? कहाँ का याद आता है? Japan. जापान, यस. Hiroshima and Nagasaki. हिरोशिमा नागासाकी मैम. या राइटली, थैंक यू. हिरोशिमा नागासाकी. अच्छा, जब हमने सुना था कि ये जर्मनी ने गिराया था, राइट, हिरोशिमा नागासाकी सागे पे बॉम्ब. एम आई राइट विद दिस? No, ma'am. USA. No, ma'am. यूएसए, आर यू श्योर? यस Yes, मैम. ओके, अमेरिका. ठीक है, कंसिडरिंग योर आंसर. So can you tell me when this bomb was dropped at Hiroshima Nagasaki, what was seen? जब बॉम्ब गिरा, एक्सप्लोजन हो, उसके बाद क्या हुआ उस जगह में? कोई बता सकता है? कैसे दिखने लगा सब कुछ वहां पे? एनी आइडिया? कुछ सुना था? Devastated, and the generation after the bomb blast were हम्म. were defected in their bodies. Like defects were found in their bodies. हाँ, वो तो मतलब जनरेशन का. प्रेजेंट सिचुएशन में जो लोग थे वहां पे, जो स्टे कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ? एनी आइडिया? यू हैव रेड अबाउट इट, एनीवन? कि जो लोग उस टाइम पे प्रेजेंट थे वहां पे जापान में, what happened to those people? Any idea about that? Anyone? Suddenly, so many of them are died at that point. Hmm. How was that? Could they find their dead bodies? Because of the explosion, nothing was left. Yeah, everything was made up into ashes and nobody could find dead bodies. And other than that, the people who actually survived, many of them were having various genetic disease, or we can say cancerous diseases were found in these people. Okay, because of the explosion, they were having many defects, and mainly cancer was one of the spreading disease. And generation after generation, many of them were giving birth to dead ones. There were high amount of abnormalities, and even cancer was one of the very leading disease seen in these region. So we can understand that this radiation which was emitted, okay, the power which was emitted, which came out from this explosion, was very huge, and was so huge enough that it is still affecting the generations which are born over there in this place. And it is said that ये जो radiations होता है, when once it is emitted, it does stays in that environment for a very long period of time. Okay, and when we talk about radiations, जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन है, आपने न्यूक्लियर प्लांट के बारे में सुना है? न्यूक्लियर प्लांट. यस मैम. ओके, मुंबई में कहीं पे है ऐसा, या फिर महाराष्ट्र में कहीं पे है न्यूक्लियर प्लांट? या किसी ने कुछ आंसर किया? couldn't hear it. चेंबूर मैम. चेंबूर. Okay. Have you heard about this center, Baba Saheb Atomic Center? BARC. Yeah. Okay. So, what do you think? Do these people handle or deal with these type of radiations? What do you think? Do these people handle or they work with respect to these radiations? And if so, अगर वो काम भी करते हैं, do you think any precaution has been taken by these people while working with it? Yes, ma'am. Yeah, okay. So basically, जो radiations होते हैं, when we say radiations, it has not just been emitted by these bombs or by the universe, but few simple instruments also do radiate radiations. Okay, radioactivity जो हम कहते हैं, it is emitted from everything. Even we human beings tend to emit out few radiations from our body. Okay, and जैसे खाने की कभी बात करते हैं तो इवन banana is does emit a few amount of radiation from itself. Not only banana, various other things also on this earth do keep emitting radiations. Okay, we all do emit radiations.
but the intensity of the radiation will vary from one to another. And these sources, जैसे कि ये बॉम्ब है, ये एक ऐसा सोर्स है which emits a very high, it tries to concentrate these radiations and it emits out it in a very high intensity. It is so high that it can go, it will interfere with the genes, with the DNA of the cell, and it will cause म्यूटेशन इन इट, यानी कि उसका जो स्ट्रैंड होता है डीएनए स्ट्रैंड, आई होप सबको पता है डीएनए स्ट्रैंड कैसे दिखता है. इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं. सो दीज रेडिएशंस आर सो स्ट्रॉन्ग इनफ दैट दे विल पेनिट्रेट इनटू द सेल, दे विल गो एंड इंटरैक्ट विद योर डीएनए, एंड डीएनए में वो जो डीएनए का स्ट्रैंड्स होता है वो उसको तोड़ देगा, या फिर जो अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन हो रहा है वो उसमें जाके इंटरफियर करेगा, उसके सीक्वेंसिंग को चेंज करेगा. सो इट विल कॉज म्यूटेशन इन दीज पीपल and it can be highly dangerous because these mutations can be transmitted from generation to generation. So it is not this explosion but even these such things, जैसे कि हमारे notepads है, computers है, laptops है, जो echo dots आते हैं, Alexa है, या फिर printers है, wireless printers है जो वाईफाई पे चलते हैं आज के डेट में, everything is been using radiation or emitting radiations, different type of radiations. Okay, everything, even your mobile phone does emits radiation, आपका टीवी है वो emit करता है radiation, any electrical gadget which you use or any non-electrical gadget also can emit different type of radiations. So today we are basically going to deal with these radiation, what the types are and how it has been emitted, and how to be precautious about these radiations in further life. So when we talk about the mobile cell towers, okay, आप सबने सेल टावर देखा है कभी? मोबाइल फोन के टावर्स देखे मुंबई में कहीं पे? Yes, anyone? Hello, is everyone here? Yes, ma'am. Yeah, आप लोग ने सेल टावर्स देखे हैं कभी? मोबाइल फोन के सेल टावर्स होते हैं घर के आसपास, बिल्डिंग के ऊपर वगैरह, देखा है कभी? Yes, ma'am. ओके, किसी के घर के पास में ही सेल टावर है? Yes, ma'am. ओके, सो इससे क्या होता है, अगर सेल टावर हमारे घर के पास होता है तो इससे बेस्ट चीज क्या होती है? अगर घर के आसपास कोई अच्छा सेल टावर है, मोबाइल सेल फोन टावर है, तो क्या अच्छा हो जाता है? नेटवर्क अच्छा आता है. नेटवर्क अच्छा आता है. और अगर गांव चले जाते हो, वहां पे पास पास में टावर्स नहीं होते, तो क्या हो जाता है? क्या प्रॉब्लम होता है? नेटवर्क मिलता ही नहीं. नेटवर्क मिलता ही नहीं है, मोबाइल में फोन ही नहीं लगते, इंटरनेट तो दूर की बात है, राइट? सो हमारा वहां पे 4G 3G कुछ नहीं चलता है. सो बेसिकली हम जब सेल टावर की बात करते हैं, सेल टावर किन चीजों से बना होता है? इसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रेदर आई कैन से अ फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज अ बेस स्टेशन होता है एंड उसके ऊपर एंटीनास होते हैं. सो इफ यू सी द फर्स्ट पिक्चर हियर, दिस इज द बेस स्टेशन एंड दीज आर द स्मॉल एंटीनास. देयर आर डिफरेंट एंटीनास, यानी कि अगर एक सेल टावर आपको दिखाई देता है तो उस पर आपको एक स्पेसिफिक एयरटेल का ही नहीं दिखाई देगा. इट वुड बी हैविंग वेरियस अदर कंपनीज और वेरियस अदर I can say the cable related towers are there. Different antennas belonging to different companies can be put up in the same base stations, and this is through these base stations you are able to receive or send any your messages or the you can say is the networking. So basically any mobile cell tower or any wireless cell towers are basically having this kind of infrastructure where it is going to have a base station and the antennas. Generally these towers are referred to as mobile cell towers. Okay, जो towers आपको दिखाई देते हैं घर के आसपास कहीं पे, these are referred to as mobile cell towers. It will provide a link that is to and fro from your mobile, यानी आपके मोबाइल में फोन आ भी सकता है, फोन जा सकता है, मैसेज आ सकता है, मैसेज जा सकता है. In India, it is estimated. I mean, it was very late back when the reading I have about. I think this is from 2007. The reading which I have, it is said that there were 5 lakh cell towers present in India. So the area of concern, definitely from that era to now, currently I think there are much more number of cell towers or mobile towers which are being created all over India. The area of concern here is जितने जितने cell tower बढ़ते जाएंगे, the amount of radiations emitted by these cell towers will also be increasing. So basically when we talk about these mobile cell towers, they emit electromagnetic radiations, and these are very powerful radiations, and whenever it is lying to a close quarters, यानी कि एकदम पास पास में जब ये
सेल टावर्स बिठाए जाते हैं, दिस विल emit higher and powerful radiations to the given square foot areas, and द फील्ड इंटेंसिटी विल ड्रॉप रैपिडली। अगर आप दोनों एंटीनाज या फिर दो सेल टावर्स को एकदम दूर डिस्टेंस पे डालते, जैसे कि एक आपने बोल दो अंधेरी में रख दिया, एक दूसरा आपने दादर में डाल दिया, सो क्या हो गया, उसका जो डिस्टेंस है दोनों एंटीनास का या दोनों टावर्स का आपने इंक्रीज कर दिया है, बिकॉज ऑफ विच द इंटेंसिटी ऑफ दिस रेडिएशन विल ड्रॉप डाउन. So more closer you bring up these towers, more higher and stronger these radiations are going to be. Definitely आपके मोबाइल में you will be getting a very nice network, but on the other side, on the biological perspective, when we see, then these radiations are going to be very strong and be very powerful enough to start affecting your biological system. Okay, so when we talk about the cell tower radiations, it is said that among all the popular designs of the mobile phone antennas in a sector antenna, the coverage, यानी अगर हम मोबाइल फोन इसके एंटीनास की बात करते हैं तो ये कैसे एमिट करता है, if you see the picture here which I have on the screen, this is of a basic antenna which you can see. So you can see it has been divided into different zones. This is the excident zone, this is the occupational zone, and this is the compliance zone. Okay, so basically people lie near the compliance zone. Okay, nobody is basically working in this main or middle zone of accidents. Okay, this is the most reactive field area. Okay, this is the radiating reactive near field area. This is much farther far away from these areas. Okay, and जब हम radiations की बात करते हैं यहाँ पे, the sector antenna which you saw, so the coverage, इस antenna का जो coverage होता है, coverage कैसा होता है, it is 180 degree horizontal and 180 degree plus or minus vertical में इसका coverage area spread out होता है. So if I give you वन पर्टिकुलर एंटेना, उसका कवरेज एरिया कैसा रहता है, 180 डिग्री का उसका कवरेज एरिया रहता है ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल एज वेल एज ऑन द वर्टिकल स्केल. So these antennas which are present are mounted either on the cell tower, जैसे हमने कहा पहले एक टावर होता है उस पे अलग अलग एंटेनास बिठाए जाते हैं. So it can happen that few buildings do have their own such cell towers. Lately अभी buildings do not allow to implant these cell towers because they are definitely harmful for the residents. So people do not allow these towers to be implanted on their buildings. People go against it, but अगर आप बहुत पुराने buildings वगैरह देखोगे ना, they do have these cell towers placed on the building top near on the terrace, so you can see them mounted out over there. The radiations which come out from these cell towers range from 869 megahertz to 210 megahertz. Now, depending upon the power density of the mechanism used and depending upon the mobile devices which are going to accept these radiations from the tower. Some survey has found out a variety of symptoms, okay, seen in people who are लिविंग बिसाइड्स द बेस स्टेशन, जो बेस स्टेशन के आसपास रहते हैं, जैसे कि अगर बिल्डिंग है किसी का, किसी के बिल्डिंग में रखा है, तो वहाँ के लोगों में क्या टाइप के सिम्टम्स ज्यादातर दिखाई देते हैं. सो अबाउट द सिम्टम्स वी विल चेक इट लेटर, बट डेफिनेटली इट डज हैज अ वेरी harmful effect on all the peoples which are coming in very close contact to these mobile towers. Now talking about, there was a bio initiative taken in the year 2012 and a report was published by 29 independent scientists. Okay, there were 29 scientists जिन्होंने एक report prepare किया था based upon the condition of the cell tower radiations and the health being impacted by the people. So there were 10 countries जिनके readings count down किए थे, out which included India, Sweden, Italy, Greece, Canada, Austria, China, Russia and US. So these were the countries, and यहाँ पे जो आपको countries दिखाई दे रही है, these were reported to be safely emitting the radiations which is around less than, or which is around 0.5 millivolts per square meter area. So अगर आपको यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, this is showing, this is representing the different countries and how much amount of radiation does the cell tower is allowed to emit in the given area. So if you see Switzerland, it is the least it is giving, that is 42 millivolts.
per square meter area. Russia is giving little bigger, that is 100. China 400, US 3000, and India is giving 4500 millivolt. Okay, so these are the different exposure radiation levels allotted by the different countries. So basically अगर school area है, hospital area है, तो इस टाइप का restriction डाला गया है उन जगहों में. Okay, so why was this done? Because this is the radiations from the cell tower and the cancers is possibly carcinogenic to human beings and may cause different type of cancer, especially brain cancer. And these things are reported by WHO, that is World Health Organization, the Agency of Research on Cancer. So, and there are various symptoms which can be shown by the people who are residing near these cell towers. So talking about the radiations, when I talk about the radiations here, it is measured, okay, the frequency of radiation is measured in case of hertz. So in this picture, you can see here, this is the basic one, the hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz. Then जैसे जैसे radiation बढ़ता है, it becomes electron volt, then kilo electron volt and milli electron volt, right? So yeah. So talking about these radiations here, if you see, it is enormous amount of radiations are emitted from different electronic gadgets which we use. Okay, so if you see this picture which is on your screen, you can see where does your mobile phone lies. So जो mobile phone है यहाँ पे आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है. This is your mobile phone, right? Okay, so this is your mobile phone here and you can see which range it lies. But before going there directly, before jumping that, we can start here from the low energy or low radiation emitting part. So, low energy emission part. So first one here, these are the okay, so this is your cell phone, right? And these are the cables, you know, which are seen in railway tracks and everywhere you can see them. They emit a very low power energy that has been emitted from them, which can be basically measured in hertz. Your telephone, your landline telephones, again, they fall under the same low energy radiation. Then comes your radios. Radio is basically emitting or radiation of say around, or it requires a radiation of around kilohertz for receiving the things that are being transmitted on the base stations. Then comes your TV. TV का जो radiation है वो कहाँ आ रहा है? Megahertz के पास. And if you see here also see the power and the telephony, radio frequency, microwaves, infrared rays. Then यहाँ पे visible light आता है, UV है, X-ray है, and gamma rays है. So these are the radiations, and you can see how much it is keep on increasing. यहाँ पे megahertz था, तो जो cell phone का जो आपको radiation है, it is ranging from megahertz to gigahertz, which is basically radio frequency से लेके microwave frequency तक वो spread out होता है, depending upon which company mobile phones you use. Then talking about Wi-Fi is basically the gigahertz, which is using microwave as well as infrared waves जो use करता है. And इवन आपके घर पे जो माइक्रो ओवन होता है, माइक्रोवेव होता है, जो कुकिंग एंड हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट ऑल्सो लाइज बिटवीन दीज रेडिएशन पार्ट ओनली. Okay, then talking about your sun is basically going to emit the infrared UV light. Okay, these whole part has been emitted by the sun. And जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जब जब रेडिएशन का लेवल बढ़ेगा, we give it the term as EV, that is electrovolts. So जो हमारा UV rays होते हैं, okay, these fall under electrovolt. जो X-ray machines होते हैं, जो scanners use करते हैं, they have these X-rays. Even copiers, okay, जो copy machine होता है, it is something related to the X-ray machine format only. जो Xerox हम निकालते हैं, copiers होते हैं, वो भी उसी format में चलते हैं. Then there are much more diagnosis के लिए बड़े बड़े machines use करते हैं जो gamma rays पे चलते हैं. ओके, एंड कुछ साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी ऐसी मशीन होती है जहाँ पे गामा रेज यूज करना पड़ता है, या फिर फूड का जो ट्रीटमेंट होता है ताकि वो एंटी बैक्टीरियल रहे, जल्दी से फंगस ना हो, तो उन फूड्स को भी ये रेडिएशन, गामा रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है. तो समटाइम्स इट कैन कॉज इफेक्ट ऑन द फूड मटेरियल आल्सो, दीज गामा रेज. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस व्हिच आर emitted throughout the world, and we come in contact with these different type of radiations.
Okay, so moving further about radiations, we will move to mobile phones. Okay, because now this is one of the very handy thing that we have in today's date with us. Because किसी के पास कुछ हो ना हो, सबके पास मोबाइल फोन जरूर होता है, right? So these mobile phones, these are wireless technology. Of course, they are, क्योंकि wired जो है उसे तो हम ये बोलते हैं ना, लैंडलाइंस बोलते हैं. तो मोबाइल फोन्स जो है बेसिकली दे आर वायरलेस एंड इट इन्वॉल्व्स हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दे कैनॉट बी परस्यूड. जो ये रेडिएशंस होते हैं, हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं, दीज रेडिएशंस आर इनविजिबल टू ह्यूमन आईज और ईयर्स. यू कैनॉट see the radiations coming from the towers to your phones. No, you cannot see them. And depending upon the frequency, they can pass through any solid object and they can travel to long distance. ये जो radiations है, जहां तक आपके मोबाइल को नेटवर्क मिल रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि वो रेडिएशन उतने दूर तक ट्रैवल करता है. And it can penetrate into your mobile phone, okay, because the SIM is inside your mobile phone, so it can penetrate a metal object also. Okay, so it makes useful for communication. So ये जो waves होते हैं, electromagnetic radiations होते हैं, these are very powerful and very useful because it can penetrate anywhere. It can be used for mobile communication, broadcasting, telecommunications, wireless applications के लिए. जिसमें मैं कहा था, मोबाइल से हम डायरेक्टली प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं बिना वायर के, या फिर जो एलेक्सा गूगल वगैरह होता है, ये कैसे है, वायरलेस कनेक्शंस होते हैं. So it is useful in that format. But there is n number of energy or radiations emitted from each of these gadgets. It is enormous increase in the usage, and in few years if you see, there are high number of mobile phones. सिर्फ number of mobile phones ही increase नहीं हुए हैं. There are various companies which have come up with different mobile phones, different gadgets. चाहे वो टॉप कंपनीज में हर साल एक नया, जैसे एप्पल है हर साल एक नया निकाल लेता है, सैमसंग है जो साल का 10 नया निकाल लेता है. सो each of them are bringing up these new phones and people keep tending to buy it. So in our country, in our own country, if we talk about where there's a population of billions, okay, crores of people lie, so each one of them do have a mobile phone subscribed in their name. So if there are 900, or you can say, and कभी कभी तो एक इंसान के पास दो numbers होते हैं, दो phones होते हैं. So you can imagine how much it can. You can just imagine that twice the number of mobile phones are present. जितना population है उसका twice number of mobile phone subscription present है rightly, and it is definitely increasing day by day. The use of it is increasing. So such enormous exposure of human beings to these radio waves will be affecting, because जितने ज्यादा phones उतना ज्यादा important network हो जाता है, ताकि सबको network मिले, तो उतने ज्यादा cell towers create हो रहे हैं, and that is how we are coming in high contact of these radio waves. Okay, it is since it affects our health, it is a matter of concern, and it needs to be studied worldwide. Many scientists have been working on these health symptoms which are being caused due to the mobile phone radiations. Now, the rate at which, these radio waves जो हम बात कर रहे हैं, these radio waves are absorbed by our body. Okay, so our body is going to absorb these waves, and the rate at which the absorption takes place is called as specific absorption rate. Okay, the rate at which it has been absorbed is called as specific absorption rate, and the unit of these absorption rate is called as watts per kilogram. So ये जो वॉट्स पर किलोग्राम है, यानी कि अगर इतने किलोग्राम का वो सामान है, तो वो वॉट्स पर किलोग्राम के हिसाब से बेचना होता है. बिकॉज अगर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वेट से अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, ओके, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट से, यानी SAR से अगर किसी सामान का या गैजेट का रेट ज्यादा है, सो दैट इज नॉट गुड और इट इज वेरी हजारियस फॉर यू टू यूटिलाइज. इंडिया परमिट्स फॉर सेल फोन कंपनीज, और सेल फोन बनाने के लिए अलाउ करता है जिसका SAR रेट ऑलमोस्ट 1.6 वोल्ट किलोग्राम ओवर 1 ग्राम ऑफ ह्यूमन टिश्यू के बराबर हो. सिर्फ ऐसे सेल फोन्स को रिलीज करना अलाउड है इंडिया में. ओके, सो and similarly it is different from each country to country how they are allowing this. So next is the television radiation. So okay, cell phone का तो हमने देख लिया कि cell phone भाई, because cell phone is something which you keep very close to your body. Okay, you always tend to keep it in your pockets, your back pockets, your front pockets. You carry it continuously in your hand. So you can imagine how much amount of radiations can get emitted from that mobile phone to your body, because you're in continuous contact with it.
And similar type of radiations are emitted from your televisions also, whether it is a wireless or a wired connection. You will definitely be coming across the radiations which have been emitted from a television. So here in the first picture if you see, I have given the various ranges. Okay, ये सारे range है जहाँ पे अगर आप बैठते हो तो how much amount of the radiation are you receiving. So जितना दूर आप बैठते हो उतना कम रेडिएशन आप अब्सॉर्ब करते हो अपने बॉडी में. सो फॉर टीवी देयर इज ऑलवेज अ रिस्ट्रिक्शन. हमारे घर में हमेशा लोग कहते हैं कि थोड़ा दूर बैठ के टीवी देखो, आंख खराब हो जाएगी. बिकॉज द वेरी फर्स्ट इम्पैक्ट दैट द टीवी कॉजेज, द रेडिएशन फ्रॉम द टीवी कॉजेज इज गोइंग टू इफेक्ट योर आईज. So the EMR value, that is the electromagnetic radiation which is emitted from TV at a distance of 30 centimeter is 20 milligauss. Okay, sorry, capital G, milligauss. It is measured in this way, and it is showed that any exposure about 2 milligauss, any exposure about 2 milligauss will start developing biological stress to a human being. Okay, so अगर हम टीवी की बात करते हैं, एंड इफ एनी पर्सन इज सीइंग दिस टीवी और एनी अदर रेडिएशन इफ वी टॉक अबाउट, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब वो 2 mg यानी कि 2 मिली गॉस के ऊपर चला जाता है, इट विल डेफिनेटली हैव एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी. वेदर यू विल गेट अ हेडेक, अ लिटिल स्ट्रेस टू योर आईज विल स्टार्ट से लिक्विड निकलना शुरू होता है आंखों से, पानी निकलना शुरू होता है आंखों से. So these kind of symptoms can be seen if the radiation start moving from 2 milligauss and up above. And जैसे कि टीवी का भी कहा, टीवी इवन इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यू आर अब्सॉर्बिंग द रेडिएशन विच इज अराउंड 20 milligauss in units. Okay, and the exposure to say 12 milligauss will may stress the human hormones also, जैसे कि मेलेटोनिन है, फिर the hormones which are helping you to regulate your sleep, your mood, and your overall health is getting affected. And जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, जैसे 2 मिलीगॉस से हमने शुरू किया है जहाँ हेडेक है, आईज को स्ट्रेस आउट हो रहा है, देन कम्स 12 मिलीगॉस which is affecting your hormones, and जैसे जैसे you increase, it will have higher effects with the radiation. It is said that to watch a TV you should sit at a distance of 1.9 meters away from the TV set. अब टीवी जहाँ पे भी रखा हो उससे आपको 1.9 meters तो मिनिमम आपको दूर बैठना चाहिए. नेवर सिट वेरी क्लोज टू टीवी और बिसाइड्स द टीवी, ऐसे साइड में नहीं बैठना चाहिए टीवी पे. ओके, व्हेनेवर यू सिट बैक अ लिटिल बिट. ओके, एंड या कोई पे अभी तो वॉल माउंट टीवीज होते थे, बट इनिशियली देयर वाज अ बॉक्स टीवी, सो इट वाज सेड दैट यू शुड नेवर सिट ऑन द बैक साइड ऑफ द टीवी एज वेल. Okay, neither besides it, neither back side. You should always be sitting in front and try to sit 1.9 meter away from the TVs. So the next thing is about microwaves. हमने माइक्रोवेव्स के बारे में सुना है, माइक्रोवेव ओवन्स के बारे में सुना है. These work on the basic fundament of using radiations again. Okay, they are heating up the food with help of these microwave radiations. बट वो कैसे गर्म करता है, थर्मल, नॉन थर्मल, वी विल स्टडी अबाउट दैट फर्दर. बट बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोवेव व्हिच इज यूज्ड इन एनी, अभी ज्यादातर लोगों के घर पे माइक्रोवेव होता है जो केक वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं या फूड को गर्म करना है उसके लिए यूज करते हैं. तो दीज माइक्रोवेव्स आल्सो एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड इट रेंजेस फ्रॉम 300 megahertz. Okay, from 300 megahertz to 300 gigahertz तक ये रेंज कर सकता है. So दो माइक्रोवेव ovens which are normally operated at, तो घर पे अगर आप देखते हो कुछ ovens होते हैं that is 2.45 gigahertz पे ऑपरेट होता है ये. And there are various criteria set by the Bureau of Indian Standard to ensure that the microwave is not hazardous. So if you are using a microwave at a home, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके लिए अचानक से hazardous हो जाए. घर पे खाना बनाने के लिए आया बट वो उल्टा पड़ गया. It is not helping with the health, but it is completely deteriorating the health. So the Bureau of Indian Standards have set up few values for the companies which are preparing such microwave ovens. The microwave oven shall not exceed the microwave emission limit of 5 milliwatt per square meter at a distance of 5 centimeter or more. So इससे ज्यादा रेडिएशन इस मशीन से बाहर नहीं आना चाहिए. Okay, so this is one of the limitations been put up for a normal operating of the condition.
और डैमेज माइक्रोवेव यानी कि अगर माइक्रोवेव खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो जो ये ऐसे ovens होते हैं ना, इट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ emitting or leaking high amount of radiations, and such exposure to the microwave can cause skin, starting में skin burns होता है, अगर ऐसे माइक्रोवेव के कांटेक्ट में आते हो, it can lead to skin burn, cataracts हो सकता है. So it is always said that you should stay away from the microwave which is, you see any damage is been caused to it, and you should call for assistance if your microwave has been damaged. उसका डोर बराबर से बंद नहीं हो रहा है, लैच नहीं है, सील नहीं लग रहा है, बिकॉज जब तक वो सील्ड है तो माइक्रोवेव का जो रेडिएशन है वो उसके अंदर घूम रहा है, पर अगर डोर जरा सा भी लूज हो गया, you're not able to open it properly, or you're not able to close it properly, the radiation over there is not getting fixed up, and you might come in contact with that radiation very easily. Okay, so you have to be very precautious while working with such gadgets in your home appliances or gadgets at your place. So when I was telling you about the radiations, मैंने कहा radiations दो टाइप के होते हैं, एक है thermal radiation और एक होता है non thermal radiation. So now what is thermal radiation? The one which emits heat is called as a thermal radiation, और जिससे heat नहीं निकलता है that is non thermal. So अभी हमारे जो माइक्रोवेव ovens होते हैं उसमें कौन से टाइप का रेडिएशन निकलता है, वो थर्मल होता है, बिकॉज उसे सामान को गर्म करना होता है. आपके मोबाइल फोन में जो रेडिएशन निकलता है ये कैसा है, थर्मल है. कैसे पता चलेगा वो थर्मल है, आप थोड़ी देर फोन पे बात करो, उसके बाद आपका फोन गर्म हो जाता है, राइट. दिस इज बिकॉज ऑफ द थर्मल रेडिएशन विच इज बीन एमिटेड बाय योर मोबाइल फोन्स. सो इन केस अगर आप मोबाइल फोन, फॉर एग्जाम्पल यू कीप द फोन नियर टू योर ईयरलोब, okay, and for 20 minutes continuously you are talking on the phone, the temperature of your earlobe, आपकी जो कान का region है, the temperature of that region will be increased by 1 degree centigrade. Okay, so that is that hazardous effect of your cell phone being near to your body, because it emits these thermal energies. Okay, it is observed that the temperature of the earlobe is increasing, and you can also sometimes, अगर आपको समझता नहीं है कि 1 degree का change आया है, but you can definitely have the sensation of your ears getting little warm, आपको गर्म लग रहा है कान के पास, या आपको दुखने लग गया, and if you continuously practice this thing, then definitely it can lead to hearing loss, which can be very much irreversible in nature. Then talking about the non-thermal effects. So what are non-thermal radiations or non-thermal effects? Radiations from cell phone sometimes is too weak. Okay, if you keep it at a distance, it is too weak to heat the biological tissues. Okay, आपके टिश्यू को एकदम उबालेगा नहीं वो, but or it is not so strong that it will break the chemical bonds in the cell. But the radio waves which are still getting emitted from the mobile phones can be like a challenge to your cell behavior. Studies have shown that even without heating up, the cell phone heating up, the exposure to the cell phone frequency, that is the electromagnetic radiations, can cause changes at molecular level of your body. Seemingly, it can occur due to stimulations of cell phone receptors, the resonating produced by the modification of the cell phones, and the radio waves can definitely cause some or the other impact on the body. Thus, causing stimulations, okay, and it can lead to various ill effects, ill consequences can be seen up. So the human symptoms can be divided into different regions, that is the biological effect, the risk, and the precautions. Talking about the biological effect, what type of effects are seen when you come in contact with such high radiations? Okay, starting से लेके एक higher level of क्या effect हो सकता है electronic gadgets का, या फिर ये जो रेडिएशंस है इसका, सबसे पहला आता है स्लीप डिस्ट्रक्शन, द पर्सन इज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली. एंड अगर आप अभी प्रेजेंट जनरेशन में देखोगे, मेनी ऑफ देम डू हैव डेवलप्ड दिस इंसोम्निया, दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली इन नाइट, स्लीप इज डिस्टर्ब, आप कंटिन्यूसली सो नहीं पाते हो, बीच में आप जाग जाते हो, आपका नींद टूट जाता है. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज रेडिएशंस व्हिच आर अफेक्टिंग योर बायोलॉजिकल सेल्स. Dizziness, headache, then inability to concentrate at a work. Okay, because you're not able to concentrate at one thing, is again just because of these radiations also it can happen. It can lead to weakening of your brain cells, because the phone hota hai, it is more near to your ears, you keep it near your ears, so it will definitely impact the brain cells, which can lead to loss of memory, because the cells are not able to losing their ability.
It can lead to palpitation of heart, that is irregular heartbeat it can cause. It can cause visual disorders, जैसे कि आई नो आँख में नंबर आ जाना, या फिर जैसे टीवी पास से देखते हो तो वो नंबर बढ़ जाए आँख का, या फिर कैटरैक्ट. As also cardiovascular problems can get rise from these electromagnetic radiations. Depression, fatigue, then buzzing in the head, ऐसे आपको बहुत सर दुखता है तो ऐसे आवाज आना. So all these altered reflexes are one of the symptoms or common symptoms seen by human beings. And there are various high risks such as Alzheimer, Parkinson's disease, which are जब न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के वो डेड हो जाते हैं या फिर डीजनरेट होना शुरू होता है, डिफेक्टिव होना शुरू होते हैं, दीज काइंड ऑफ एंड वो इस हद तक डीजनरेट हो जाते हैं, फिर डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स कि वो इरिवर्सिबल हो जाता है. जैसे ही वो इरिवर्सिबल हो जाता है हमारे बॉडी के छोटे 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 पार्ट्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के, वो डेड होना शुरू होते हैं, ड्यू टू विच यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, योर बॉडी फंक्शनिंग इज बीन अफेक्टेड, द बॉडी बैलेंसिंग हो, क्या करना है भूल जाना, चलने को प्रॉपरली ना होना. सो ऑल योर न्यूरॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी, you start losing it. So these are seen in patients of Alzheimer and Parkinson's. It can also lead to immune system degeneration, ear damage, irreversible infertility. Okay, it can also cause impact on the reproduction and the cells of the that. Okay, it can affect the skin as well. So quickly I will go through the precautions. We are timed up. Okay, the precautions here is use go for limited use of cell phones and other gadgets which are emitting these type of radiations. You should, अगर आप फोन पे बात कर रहे हो कम देर के लिए बात करो, talk for a short time. Rather than talking, you can text message a person or you can send a WhatsApp message to a person. Use cell phones with lower SAR value, that is specific absorption rate value. फोन अगर आप फोन उठा के देखोगे उसकी वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया गया है. सो इफ यू सी हियर फोन्स एंड उसका जो एमिशन रेट है वो भी साइड में स्पेसिफिकली बताया गया है. सो बेसिकली व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर मोबाइल फोन्स, डू नॉट जस्ट सी द कंपनी, द मेगापिक्सल ऑफ द कैमरा और व्हाट आर द फीचर्स आर देयर, ब्लूटूथ है, वायरलेस है नहीं है, 4G है कि नहीं. ऑल्सो सी द वैल्यू, दीज वैल्यूज, ओके, SAR's value written on the mobile phones, and try to select the one which has the lower SAR value. You should try to use your mobile phone on speaker mode, okay, rather than for mobile near to your ears. You can switch it on to the speaker mode and use it. Either use wired earphones, okay, so that you can keep your mobile little away from your body, and use Bluetooth as well. But you should always try to keep the cell phones and the radiations at least say apart 30 centimeters from your body. Okay, then instead of mobile phones, you can also more of prefer for the landlines. And do not keep your cell phones near to your body. When you go home, try to keep it away from your body. Try to keep all the electronic gadgets at one area and try to be away from these gadgets. So at home or office, try to be away from these gadgets and build a real connection with the nature. Talk to people face to face instead of using your cell phones. And at home also, being busy with your cell phones and seeing into it, seeing what the social media is giving you, rather try to interact with your people face to face and be away from the radiation and keep yourself healthy enough. Okay, so that's all for today. I hope your lecture was clear to each one of you. Yes, students can respond. The lecture was clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so yeah, before your leave, I just want to announce one thing. I have put up a test on GC. 3 बजे वो टेस्ट ओपन होगा. द टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द डिजीज पार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, वाटर वाला पार्ट नहीं है, जो स्टार्टिंग का हमने पढ़ा है डिजीज तक, इट इज ऑल बीन कवरिंग दैट. सो स्टडी प्रॉपरली. द फॉर्म लिंक विल ओपन एट 3 PM. द फॉर्म विल क्लोज डाउन at 6 PM in the evening. So you have to study properly and then sit down at 3 PM to fill up the test. Okay, आपका टेस्ट का जो गूगल फॉर्म है उसे फिल करना है. इट इज few are MCQ pattern, few are in 1 sentence form, 2 sentence form pattern में भी है. So you're going to answer correctly according to whatever the question has asked you to do. Okay, all the best everyone, and you all can take a leave. Thank you. Bye.